Hello and good afternoon, guys. Hope you all are doing well and you might have completed with part 1 of this video. So now without wasting any time, let us start with the further parts. But before we start ahead, I would like to once again revise what we've done yesterday to illustrate you once again how you can revise with this one recall page that I have provided to you all. चलो रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं. तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज मिशन लाइफ. ओके, लाइफस्टाइल का फुल फॉर्म क्या देखा था हमने? सॉरी, लाइफ का फुल फॉर्म क्या देखा था हम लोगों ने? इट वाज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. ठीक है, अंडरस्टूड. तो अब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर launched this mission at COP26 of UNFCCC. ठीक है, फिलहाल के लिए हमने देखा था कि UNFCCC एक क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है. क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. एंड COP क्या है? COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड दिस इज अ काइंड ऑफ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ UNFCCC. ठीक है, ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट. मतलब ये मिशन कहाँ से आया? तो ये मिशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है COP26 में, जो कि अभी रिसेंट में कंक्लूड हुई है ऑफ UNFCCC. कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एक तरीके से एमलगमेशन है दो कॉन्सेप्ट्स का. कौन से दो कॉन्सेप्ट्स का? एमलगमेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब use of resources in a way that number one, they are beneficial for the present day generation. They are beneficial for the present day generation as well as they are preserved for the future generations. Preserved for the future generations. ओके, यहाँ हमने एक कोट भी देखा था जो कि एक बहुत रेलेवेंट कोट है. यू कैन यूज इट इन एसेज एज वेल एज योर आंसर राइटिंग. Does anyone remember that quote? Before I tell you, just pause the video and try to recall it. The quote was, we haven't inherited Earth. We haven't inherited Earth from our forefathers. Earth from our forefathers. From our forefathers. Rather, what we have done is we have borrowed it for our children. We have borrowed it for our children. So this is the point that we have to remember. Okay, ये अर्थ हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है हमारे फोरफादर्स का. ये एक उधार है, एक बोरोइंग है जो हमने हमारे फोरफादर्स से ली है अपने बच्चों के लिए. So we have to develop in such a way that we are not destroying the resources for the future generations. That's the entire concept of sustainable development. Sustainable development के साथ साथ एक concept और जुड़ा है, that is inclusive growth. अब inclusive growth sustainable development के कौन से एरिया से डील करता है? Only the area of development. कल जब हम आपको पढ़ा रहे थे, so I have told you sustainable development के जो concept है वो कहाँ से आया है? वो एक डायलेमा से आया है. जो डायलेमा है डेमोक्रेसीज के पास, टू डेवलप एज वेल एज टू कंजर्व. ओके, द डायलेमा टू डेवलप एज वेल एज टू कंजर्व, यहीं से आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका कॉन्सेप्ट. तो ये डेवलपमेंट वाले कॉन्सेप्ट में ऐड होता है IG, इंक्लूसिव ग्रोथ. मतलब हमको डेवलपमेंट कैसे करना है? सो दैट डेवलपमेंट रीचेस द लास्ट पर्सन ऑफ द क्यू.
लास्ट पर्सन तक हमें डेवलपमेंट पहुंचाना है, बी इट रिलीजियस माइनॉरिटी, बी इट अ पॉलिटिकल माइनॉरिटी, बी इट एन इकोनॉमिक माइनॉरिटी, बी इट अ सोशल माइनॉरिटी, व्हाटसोएवर। ठीक है, हमें एक हर एक लास्ट पर्सन तक, हर एक नीडी तक उस डेवलपमेंट को पहुंचाना है। दैट बिकम्स योर इंक्लूसिव। तो पहला पॉइंट जो हमारा था इस कॉन्सेप्ट में, दैट वाज सॉरी, हाँ, that was about it's an amalgamation of sustainable development as well as inclusive growth. दूसरा पॉइंट था हमारा, we are trying to create pro planet people. Pro planet people का मतलब people who are working in synchronization with the planet. थर्ड पॉइंट हमारा था, this is trying to create a nudge economy या a nudge effect. ठीक है, नड्ज इकोनॉमी या नड्ज इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली किसी काम को करने के लिए, हम उस काम को करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, नड्ज इफेक्ट देखना है तो हमें इसके 3 फेजेस पे जाना पड़ेगा। इस प्रोग्राम के 3 फेजेस क्या हैं? वेट फॉर अ मिनट गाइस, लेट मी इरेज दिस। तो इस प्रोग्राम के 3 फेजेस क्या हैं? पहले फेज में हमें क्या प्रमोट करना है? हमें डिमांड प्रमोट करनी है। ठीक, देन एज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट गोस, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो सेकंड में हमें सप्लाई प्रमोट करनी है। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाएंगे। थर्ड में हमें पॉलिसी चेंजेस लाने हैं। जब डिमांड सप्लाई आ गई तो मतलब ये चीज मार्केट रेगुलेशन में आ गई है, अब हमें इसे पॉलिसी के अंडर में रेगुलेट करना है। तो हम ऐसे 3 फेजेस में प्रोग्रेस करेंगे इन दिस मिशन, राइट? So this is creating a kind of nudge effect, क्योंकि डिमांड हम कैसे बढ़ाएंगे? we'll create such environment जिससे कि वो डिमांड बढ़े, राइट? अब आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज, द बिगर पिक्चर। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर में हमने पॉइंट्स क्या क्या देखे थे? वेट फॉर अ सेकेंड। See, I'm doing this exercise for you again and again so that you might realize how well you can revise the things with a single page. No need to go through the entire material again and again, because this recall mechanism is only going to help you out in mains answer writing. And Yojana magazine, you just have to cover for mains answer writing just to build certain perspectives, right? अगर मिशन लाइफ पे कोई क्वेश्चन आता है तो this material is more than enough to write an answer. Okay, you don't have to search for any other thing. मिशन लाइफ क्या फोकस करता है, क्या उसकी मेथोडोलॉजी है, क्या उसके फेजेस हैं, किस चीज को एड्रेस करता है, वे फॉरवर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें हमने इसमें ऑलरेडी एड्रेस कर रखी है, राइट? आई हैव गिवन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो, so that if you want to write an answer on mission life, you must suffice with this material. You don't have to go anywhere else, right? चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज बिगर पिक्चर में हमने देखा था कि हमें क्लाइमेट चेंज को लिमिट करना है, ग्लोबल वार्मिंग को, सॉरी, द एनुअल वार्मिंग रेट को हमें वो करना है, एनुअल रेट ऑफ वार्मिंग को लिमिट करना है हमें अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम लिमिट नहीं करते हैं तो क्या होता है? 2 डिग्री सेल्सियस पे इट्स एक्सपेक्टेड कि 3 बिलियन पीपल आर गोना फेस chronic water scarcity. 3 billion people are going to face chronic water scarcity. Okay, there are many other threats, but फिलहाल योजना में यही पॉइंट एक मेंशन था, और आपके एग्जांपल देने के लिए 1 पॉइंट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आप एक ही पॉइंट पे 10-10 एग्जांपल्स नहीं लिख सकते हो आंसर में। सो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट था हमारा क्लाइमेट जस्टिस का। क्लाइमेट जस्टिस में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था ऑफ CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी, सारे देशों की एक कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि उन्हें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट यूनाइट होना है, उन्हें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन उन सारे देशों की एक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। उन्होंने पॉल्यूशन में जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना ही उन्हें कंट्रीब्यूट करना है मिटिगेशन में, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। क्योंकि होता क्या है कि जो पुअर नेशंस हैं, वो पुअर नेशंस एमिशंस में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। दे डू नॉट एमिट एज अ डेवलप्ड कंट्री इज एमिटिंग, राइट? एंड मोरोवर इनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है। इफ यू आर गोना आस्क देम टू कंट्रीब्यूट टू द लेवल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, they would not be able to do this, okay? Because anyway
if you are restricting them from emissions to that level, to the level you are restricting a developed country, or you are forcing them to pay that much as you are paying, as you are implementing some amount of fine on a developed country, तो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो ये कर पाए। और इनका रिजल्ट क्या होगा कि जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो ऑलरेडी पुअर कंट्रीज हैं, they are going to exhaust their resources to a much larger scale और वो further development promote नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। तो क्लाइमेट जस्टिस करना है, किसी भी कंट्री को एक्सटॉर्ट नहीं करना है इन द नेम ऑफ क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट जस्टिस के बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? It was about climate colonialism. कैसे global north is trying to colonialize the global south in name of climate related infrastructure or climate related interventions, right? Now next चीज हमने देखी थी carbon colonialism. Carbon colonialism is related to the carbon emissions trading. Okay, तो क्या क्या पॉइंट थे हमारे? एक कि 1.5 डिग्री सेल्सियस था, एक हमारा क्लाइमेट जस्टिस का था, एक पॉइंट था हमारा क्लाइमेट कोलोनियलिज्म का, दूसरा पॉइंट था हमारा कार्बन कोलोनियलिज्म का, 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट था हमारा रिगार्डिंग योर क्लाइमेट डिनायलिज्म। ठीक है, क्योंकि दीज चेंजेस आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, क्लाइमेट डिनायलिज्म, व्हाट इज दिस क्लाइमेट डिनायलिज्म? क्योंकि जो पेस है इन चेंजेस का, पेस है इन चेंजेस का, दैट पेस इज स्लो। ठीक है, so it's not observable right now, but it's going to cause an amount of huge destruction 50 to 100 years from now. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल नहीं होते इसलिए वी आर denying it at individual level या at social level as well as at political level। कल समझाया था हमने आपको पॉलिटिकल लेवल पे क्यों, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में इट्स अबाउट 5-year एजेंडा, it's just a 5-year plan, so they do not matter what is going to happen 50 to 100 years from now, but among the scientific community it's a climate emergency, it's a climate emergency, that's why you need this mission, that's why you need to make lifestyle changes। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, 3 बेसिस देख लिए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट हो गया, नीड फॉर द मिशन हो गया। आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड में था कैसे हमको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स घर की ऐसी होनी चाहिए कि यू कैन प्रिजर्व मोर एंड मोर एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Then apart from this, you have traditional water harvesting methods which India used to follow. Vegan diet, right? तो ये सारे points इसमें। हाँ, एक चीज is missing over here is इंडिया केस भी पढ़ा था हम लोगों ने। इंडिया का रोल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट मिसिंग है, एड ऑन कर लेना आप लोग। इंडियन केस हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन था और सेकंड कौन था? फर्स्ट था हमारा चाइना, सेकंड था यूएस, राइट? तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है, जिसकी वजह से इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है क्लाइमेट चेंज में वो बढ़ जाता है, राइट? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस दैट इज क्रिएटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम। क्यों कर रहा है ऐसा? आई टोल्ड यू व्हेन सर विल बी डीलिंग विद द ज्योग्राफी पोर्शंस, he will be teaching you the heat budget, how it is maintained on the earth, okay, and why carbon dioxide has an important role in global warming. He will be explaining you each and every point, so don't worry about it. तो ये रिवाइज कर लिया हम लोगों ने। So hope you all have enjoyed the yesterday's class and hope you all have understood in this time being, जब तक कि हमने ये चीजें आपको समझाई, hope you all have understood how to use this recall page। एक चीज ऐड कर लेना इसमें, इंडिया केस वाला पॉइंट आई मिस्ड इट आउट बाय मिस्टेक। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं।
हमारे आज के टॉपिक पे। आज हमें दो टॉपिक्स कवर करने हैं। एक जो इंडिया इज प्रमोटिंग इट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन एट ग्लोबल लेवल, ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमें जो कवर करना है दैट इज डीबीटी। बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? So wait for a second. Let me skip to that slide. Hmm. Again, आगे आपका रिकॉल पेज। यहाँ ब्रॉड हेडलाइंस देख लेते हैं, हमें किस किस हेडिंग्स में पढ़ना है, सब हेडिंग्स। वेट फॉर अ सेकेंड। सबसे पहले हमें पढ़ना है हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया देखेंगे, फिर हम देखेंगे होलिस्टिक वेलबींग एज अ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक वेलबींग। फिर हम देखेंगे आयुष और उसकी रेलेवेंसी। आयुष में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व, द गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, देन वी विल सी अबाउट मेंटल हेल्थ, देन अबाउट मेडिटेशन, देन इट्स वे फॉरवर्ड। ठीक है, अभी नहीं समझ आएगा, व्हेन वी विल स्टडी इट देन आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करना, राइट? चलो लेट्स बिगिन। वेट फॉर अ सेकेंड। शुरू करते हैं। चलो तो कॉन्टेक्स्ट में क्या है, टॉपिक क्या था हमारा, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द गोल ऑफ होलिस्टिक वेलबींग। होलिस्टिक वेलबींग क्या है अभी हम देखते हैं। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया एंड इंडिया कंसिडरिंग द एंटायर वर्ल्ड एज होल फैमिली। ये पॉइंट्स हमने क्यों मेंशन किए हैं, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू कोट दीज पॉइंट्स एक्चुअली इन योर आंसर्स। इंडिया के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, everyone should be rid of diseases and everyone should enjoy a good and peaceful life. दूसरा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, the entire world is our family. So regarding these concepts, the context here is because India holds these two concepts as its core concepts of its culture. So India's role in the global health security becomes very important. Okay. आगे देखते हैं, exemplary contribution to the vaccines and medicine during COVID times. India has shown a very good gesture while COVID period. We have sent vaccines to some of the poorest nations. We have built our own vaccines and prevented our country citizens from dying at a larger scale. And during COVID times, India has also helped a lot, even to the developed countries, in the scene of vaccines and medicines. So this has built India's image as a potential contributor to health and medicine. Third point जो आता है, that is India's hosting of G20 is deemed to be inclusive, ambitious
action oriented and decisive. तो देखो कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या है, ये एक होलिस्टिक टॉपिक है. The context is carried on from many topics. पहली चीज है इंडिया के जो अपने खुद के दो प्रिंसिपल्स हैं जो उसके कल्चर को डिपेक्ट करते हैं, इसकी वजह से इसकी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. दूसरी चीज हमारा कोविड टाइम्स पे जो एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस रहा है, इसने इंडिया की इमेज को एज अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू हेल्थ एंड मेडिसिन काफी हद तक एनहांस कर दिया है. थर्ड पॉइंट है हमारा जो इंडिया इस साल G20 होस्ट कर रहा है फॉर दिस ईयर. G20 फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, इट्स एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग. ओके, इसको इंडिया इस साल होस्ट कर रहा है. तो ये होस्टिंग जो है ये डीम की जा रही, मींस इट्स एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसाइसिव. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्ट्स. ठीक है, इंडिया ने अपने आप को एज अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रूव किया है. तो इसलिए इंडिया से एक्सपेक्टेशंस हैं कि द टाइम India is getting to head over, या India is getting to preside over G20, this time has to be of some great decisions, right? So that is one of the context over here, right? अब आते हैं holistic well-being as a concept. So what is this? Wait for a second. What is this entire concept about? देखो, holistic well-being means, well-being का मतलब हम सीधा सीधा ये डिराइव कर लेते हैं कि वेलबींग का मतलब है कि हमें कोई डिसीज नहीं, राइट? हमने ये डिराइव कर लिया कि वेलबींग का मतलब है कि वी आर फ्री ऑफ डिसीजेस, बट ऐसा नहीं होता. वेलबींग इज अ वेरी होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इज अ वेरी होलसम कॉन्सेप्ट. हेल्थ इज अ वेरी होलसम कॉन्सेप्ट. हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज, it is a state of complete well-being, be it physical well-being, be it mental well-being, be it your intellectual well-being. It's a wholesome concept, right? देखो, WHO also defines health not merely as absence of diseases, but rather a state of complete well-being. Hippocrates' Science of Medicine says, the goal of medicine is the complete removal of distress of the sick. These two are very important lines you can use in your any health related answers as well as your essays. Okay. So WHO is defining that health is not merely the absence of diseases. मतलब आपको कोई डिसीज नहीं है इसका मतलब कि आप हेल्दी हो. दिस इज नॉट द नॉर्म as it actually goes. Norm is कि you have to be in a state of complete well-being. Mental health भी इसी में आती है, आपकी बॉडी का फिजिकल स्ट्रेस भी इसी में आता है, इमोशनल स्ट्रेस भी इसी में काउंट होता है. Each and everything that's going on with your hormones, each and everything that's going on with your body matters. It doesn't mean that only there's absence of diseases, so you can be regarded as a healthy person. No. Your lifestyle should be a healthy one. Okay. Second quote is from Hippocrates' book Science of Medicine, where he says that goal of medicine is not only removal of the disease, but it is the complete removal of the distress of the sick. Right? So this is the concept of holistic well-being. Now coming on to Ayush. So what is the relevancy of Ayush? Because Ayush is a wholesome name given to a group of things. 7 सब कैटेगरीज हैं आयुष की. ठीक है, अब देखो यहाँ समझने वाली चीज ये है, आयुष refers to traditional non-conventional systems of health care and healing.
पहली चीज है, टर्म जो पहला है दैट इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब हमारे जो ओल्ड एज से या सिंस एंशियंट टाइम्स जो तरीके चले आ रहे हैं ट्रीट अ पर्सन, ठीक, वो तरीके होते हैं द ट्रेडिशनल वेज। दूसरा टर्म आता है इसमें नॉन कन्वेंशनल वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। आयुष इज नॉट अ वे ऑफ मेडिसिन। आयुष इज नॉट अ वे ऑफ मेडिसिन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या अ वे ऑफ रूटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? जनरली हम क्या करते हैं, हम आयुष को ले लेते हैं कि आयुष का मतलब है कि हमें आयुर्वेदा अपनाना है, आयुष का मतलब है हमें मेडिसिन छोड़नी है। ये नहीं करना है। आयुष is actually a non-conventional system. It's not a treatment. It's not at all a treatment. It's a way of life. ये conventional disease curing mechanism नहीं है. It is not a conventional disease curing mechanism. It is actually a kind of preventive mechanism. Conventional systems तो पहले भी they were surgeries and medicines. नॉन कन्वेंशनल सिस्टम का मतलब होता है आप कैसे कोई और एक्स्ट्रा इंटरवेंशंस करके यू आर गोना इम्प्रूव योर हेल्थ, या यू आर गोइंग टू वर्क ऑन एरियाज वेयर द कन्वेंशनल सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग। ओके, so this is important to be understood. Traditional and non-conventional systems of healthcare. 7 सब कैटेगरीज हैं इसमें, इनकी सब कैटेगरीज देखते हैं। आयुष इज नॉट ओनली आयुर्वेदा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। आयुष की अलग अलग 7 ब्रांचेस हैं। समझते हैं क्या है ये 7 ब्रांचेस। Okay, so let us understand these 7 subcategories of Ayush. Number 1 is Ayurveda. Number 2 is Unani. Number 3 is Siddha. Number 4 is Yoga. Number 5 is Naturopathy. Number 6 is Sova Rikpa. And number 7 is Homeopathy. Ayush is not equal to Ayurveda. This is a general misconception among people. Ayush is not Ayurveda. It is all these 7 subcategories, 7 ways of traditional, non-conventional systems of health. Right? इनकी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, क्या है ये मेथड्स, क्या नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि आयुष इज नॉट ओनली आयुर्वेदा, इट्स अबाउट ऑल दीस 7 subcategories. Sova Rikpa is a North Eastern community practice. बाकी ये सारी ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस। Let us move ahead now. Relevancy of Ayush and the steps taken by Indian government to promote Ayush. तो ये देख लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है to promote आयुष। सबसे पहली सब हेडिंग हमने दी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। 5 रिसर्च काउंसिल सेटअप किए गए हैं। as autonomous institutes of research in Ayurveda, homeopathy, yoga, Unani, Siddha, naturopathy. Research undertaken is cross-disciplinary, including academia, hospitals, businesses, and also foreign collaborations. Right? तो R&D में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहली चीज क्या करी है, 5 रिसर्च काउंसिल सेटअप किए हैं डिफरेंट फील्ड्स के लिए, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी। रिसर्च जो है ये क्रॉस डिसिप्लिनरी होती है, मतलब सिर्फ एकेडमिक रिसर्च नहीं है, वी आर इन्वॉल्विंग इवन द बिजनेसेस एंड द हॉस्पिटल्स so that this research could be materialized into some amount of this research could be capitalized
into some medicines or something, right? That is one point. Then this research also includes foreign collaboration. Foreign universities are also participating in these researches. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे CIMR Center for Integrative Medicine and Research has been set up at AIIMS Delhi campus under Ayush Center for Excellence program. Proper scientific research on yoga began for the first time in the country from here only. ठीक है, तो ये पॉइंट सी these are some of the factual things. No explanation is needed over here. You can just go through these things and learn them. ये कुछ पॉइंटर्स दे देंगे आपको to write in the mains. तो पहला है हमारा R&D के अंडर में दो चीजें आती हैं, 5 रिसर्च काउंसिल सेटअप किए जो कि क्रॉस डिसिप्लिनरी और फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ है. CIMR सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स दिल्ली कैंपस में सेटअप किया गया है. ये पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ से फॉर द फर्स्ट टाइम योगा पर रिसर्च, प्रॉपर साइंटिफिकली रिसर्च होना शुरू हुआ. नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष. पहले तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने के पॉइंट्स देख लिए थे, अब हम स्टैंडर्डाइजेशन के देखेंगे क्योंकि आयुष इज स्टिल नॉट गवर्नमेंट डिमार्केटेड. मतलब एक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए यू नीड टू डिमार्केट इट विद सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, राइट? तो उसके लिए हम एक आयुष मार्क बनाने का प्लान कर रहे हैं. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 में द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर has announced the launch of Ayush Mark. This will be a hallmark to recognize Ayush processes and medicines associated with Ayurveda, homeopathy, naturopathy, Unani, Siddha, Sogarikpa, etc. Right? And an Ayush vertical is going to be created in the BIS, Bureau of International Standards. What is this organization? The Bureau of International Standards is basically an organization which sets the guidelines for what standards, what products should need, right? तो एक तरीके से रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गाइडलाइंस सेट करती है और मॉनिटर करती है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स को. तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष में आता है, पहला हमने डिसाइड किया है, PM ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फ्रॉम ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 में कि वी विल बी लॉन्चिंग एन आयुष मार्क फॉर ऑल दीज आयुर्वेदा, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी मेडिसिन. ठीक है. दूसरा BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक आयुष वर्टिकल भी क्रिएट करेंगे. ये आयुष मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है. देन आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या क्या पॉइंट्स हैं टू प्रमोट इट. It strictly envisages to mainstream the potential of Ayush within pluralistic system of integrated healthcare. देखो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है दैट इज नॉट ओनली टू प्रमोट आयुष बट टू प्रमोट आयुष. इनिशियली भी हमने आपको बताया था आयुष क्या है. इट्स अ नॉन कन्वेंशनल मेथड. तो कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ वी आर प्लानिंग टू गिव इट अ इंटीग्रेटेड फॉर्म in integrated healthcare with the conventional medicines. ठीक. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी इस बारे में बोलती है कि पोटेंशियल आयुष के पोटेंशियल को हमें इंटीग्रेट करना है इनटू आवर दिस प्लूरलिस्टिक सिस्टम ऑफ हेल्थ, इनटू आवर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हेल्थ, राइट? देन नेक्स्ट आता है अबाउट ग्लोबल मेजर्स. What are the global measures that are being taken in this direction? सबसे पहला है WHO, Global Center for Traditional Medicine, world's first and only global outposted center for traditional medicine across the globe is now being set up at Jamnagar, Gujarat, with the support of Government of India. This will be okay. So WHO में क्या है, Global Center for Traditional Medicine एक सेटअप किया है. ये WHO का पहला है कि जो आउट कैंपस या मींस WHO की बिल्डिंग के बाहर या WHO के जुरिस्डिक्शन के बाहर वर्ल्ड में पहली बार एक सेंटर सेटअप किया है WHO ने, विच इज बीइंग सेटअप एट जामनगर इन गुजरात विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्या क्या काम करेगा ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन?
It will be setting up guidelines for researchers in the field of traditional medicine, tools and methodologies for data collection, analytics, and impact assessment. And government also envisages WHO Traditional Medicine Informatics Center to bring together existing traditional medicine data banks, virtual libraries, academic institutions, and research institutions. ठीक है, तो ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम क्या होगा? ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में वी हैव सीन ना कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए 5 R&D सेंटर्स या 5 रिसर्च सेंटर्स खोले हैं गवर्नमेंट ने। तो इस रिसर्च को प्रमोट करने से पहले हमें कुछ गाइडलाइन सेटअप करनी पड़ेंगी कि किन बेसिस पर ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमें रिसर्च करनी है, राइट? सो वो गाइडलाइन सेट करने का काम करेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, विच इज WHO's वर्ल्ड्स फर्स्ट आउटपोस्टेड सेंटर, ठीक, जामनगर, गुजरात। फिर ये टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज डिसाइड करेगा फॉर डेटा कलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक तरीके से एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है, to bring together all the traditional medicine data banks, virtual libraries, academic institutions, and research institutions in the field of Ayush, yeah, in the field of traditional medicine, right? अब आ जाते हैं हम achievements of Ayush पे। तो till date what all Ayush has achieved? Achievements of Ayush. Till date, what all Ayush has achieved is all listed over here. First thing is the Ayush Sanjeevani mobile app. Use of traditional medicine methods for maintenance of health in India during COVID. कोविड के समय पे ये एक ऐप लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप। इस ऐप के थ्रू क्या था, ये ट्रेडिशनल वेज इट वाज डिसेमिनेटिंग एजुकेशन अमंग द पॉपुलेशन, dissemination of education among the population regarding what are the traditional ways how you can enhance your health, in times of COVID, how you can build your immunity. You might have remembered during COVID there was a thing like Ayush Kwath. Kadha was very much in डिमांड दैट टाइम ना, तो एक आयुष approved एक क्वाथ था which was by Emil, Ayush Kwath. I don't know how many of you remember or how many of you have gone through it, but I think every household was having this. So these were the ways how government was trying to promote how traditional medicine can be helpful in all these areas, right? Okay. Next topic, next point here is successful app of Ayush SR tablets. Okay, sorry, this is a misprinting. It's not successful app, it's successful usage. Just correct it in your PDFs also. Yeah, I'll correct and give it to you. So successful usage of Ayush SR tablets in occupational stress among the IT professionals. So among these IT professionals, there's a tablet known as Ayush SR tablet, which is helping these professionals to deal with their occupational stress. So instead of eating some chronic relax tablets or some stimulating tablets that are provided in a conventional way of medicine, but they have some amount of side effects. So instead of having that, we can have this traditional way of Ayush SR tablets. So there are evidences that usage of these tablets have helped IT professionals to deal with their occupational stress. Why have they been tested on IT professionals only? Because they have the highest level of occupational stress, right? Then there is an example of Saraswat Grit in providing neuroprotection in treatment of Alzheimer's disease. So Alzheimer's disease, I guess most of you might be knowing, it's a genetic disorder
and it's a disorder in which the baby does not have adequate amount of cognitive development. Right. So to aid his cognitive development, some neuroprotection tablets are given to him for his lifetime. But again, they have some of their different side effects. So instead, we can use this traditional medicine of providing neuroprotection. Then the fourth is an interesting point about iogenomics. Iogenomics kya hai? It is combining the principle of Ayurveda and genomics. Genomics क्या होता है? Simple terms में it is the study of genes. Study of genes या study of the behavior of genes. Study of the behavior of genes. Right. So iogenomics field क्या है कि while you are studying genes, while you are studying the behavior of genes, you will identify what are the potential risks. What are potential risks that are involved, and you can provide a treatment and you can provide a prevention to these potential risks beforehand by means of Ayurveda. या दूसरा एक यूज इसमें हो सकता है कि you are checking the authenticity of Ayurveda, yeah, you are checking the applicability of Ayurveda on a person by recording the behavior of how the genes are performed. Okay, by recording the behavior of genes. Right? So this is it with it. आगे pointers दिए होंगे इसलिए you can just go through it. Iogenomics includes understanding the genetic basis of individual variations in response of a treatment and thus develop the personalized treatment. ठीक है, यही point था which I explained you. Then next is Tri Sutra, translational research and innovative science through iogenomics. CSIR is running this program in collaboration with Ministry of Ayush. Tri Sutra, translational research in innovative science through iogenomics. ठीक है. Then coming on to mental health. Mental health and Ayurveda. Okay. So let's see mental health and Ayurveda. Now we've seen holistic well-being is a state of complete well-being. Holistic well-being is a state of complete well-being. Now, when we say complete well-being, it includes external well-being as well as your internal well-being. Okay, the well-being of mind and soul. Then there's a popular saying that healthy mind resides in a healthy body. So for this, you can use this line instead. Means sana and corpore sana. Then Paul Pierce's book, The Heart's Code, is that psychological plus emotional heart well-being assures prolonged well-being of the physical heart. Okay, so psychologically or emotionally, आप जितना heart well-being. Sorry, wait for a second. Sorry guys, I think the voice was a little problematic. कोई बात नहीं, I'll be repeating whatever I have taught. मेंटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा देख रहे थे हम लोग. होलिस्टिक वेलबीइंग का मतलब होता है कि कंप्लीट वेलबीइंग, सो दैट इन्वॉल्व्स बोथ द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल वेलबीइंग. Then there's a popular saying, we have already listened to it quite many times. The healthy mind resides in a healthy body. So instead of this common saying, you can use this terminology, mens sana in corpore sana.
Then there's a book, The Heart's Code by Paul Pearsall, where he says the psychological and emotional heart well-being assures the prolonged well-being of physical health. Right? So these are some of the pointers you can use directly in your answer that I've given. I mentioned them over here. Then this is an important point that psychosomatic diseases or the lifestyle diseases. Psychosomatic diseases or the lifestyle diseases can be fatal and even life-threatening if they are ignored. Right? So lifestyle diseases are also very important part of treatment of well-being, assuring well-being of course, right? So, there are two things. One thing you can call it as treatment or cure, and another thing is healing. So your body requires treatment. Any physical stress on your body or any kind of physical disease that requires treatment. But your mind or soul, what does it require is healing. Yeah. So mental health requires healing, and healing comes from meditation. Mental health requires healing, and healing comes from meditation. Okay. So how does Ayush offer a treatment to mental health is meditation or yoga. Meditation involves refining of the inner existence of human being. Upanishads describe an inner self within the inner existence. This inner self consists of 5 koshas. Annamaya kosh, Pranamaya kosh, Manomaya kosh, Vijnanamaya kosh, Anandamaya kosh. Meditation works on uplifting a person from the outermost to the innermost self. देखो उपनिषद ने ये 5 कोश बताए हैं जो बॉडी में होते हैं. अनामय कोश इज द फूड और द आउटरमोस्ट कोश. फिर आता है pranamaya kosh or the energy kosh. This is the regulation of the flow of pran. Manomaya kosh, as the word says, man, it's mind. Right? Awareness of thoughts and emotions. Vijnanamaya kosh, or you can say it as intuition. It's the spiritual wisdom. And Anandamaya kosh, or the bliss. Sorry. It is the deepest layer or the true inner self, joy and love. So from Annamaya kosh to Anandamaya kosh, this is the journey that meditation travels. This is what the scriptures be. This is what meditation does. आपके external food related self से लेके it comes on to your state of bliss or your state of natural happiness. So meditation is one of the ways what Ayush offers to the healing of mental health. Now, what are the cascading benefits of mental health? See, why mental health is important. Why there's a need of focusing on mental health. Now, as your mental health is fine, you'll be reducing the digital addiction. And this will instead prevent harmful radiations from entering your body. And this will promote your health. जितना आपका डिजिटल एडिक्शन कम होगा उतनी आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगा. Right? Then next is mentally healthy person will have healthy sleep patterns. So this will reduce the stress and anxiety. And again, this will promote your physical health. Right? Today, as statistics say, around 80 to 85% of the human population is suffering through a disease which is termed as stress or anxiety. Okay. So this is a kind of disease that is taking a lot from the lives of around this good number of people. So if you are reducing stress and anxiety with your healthy sleep patterns, you are actually improving your physical health.
Positive hormonal effects. See, hormones in our body are triggered by our emotions. Hormones are duly linked with our emotions, and it's scientifically proven fact, right? It's scientifically proven fact that these hormones are linked with our emotions. So there will be positive effects on good hormones like serotonin, melatonin, telomere length. Telomere is actually the length of a kind of growth hormone. That's not your concern. आपको अभी इन hormones में in depth नहीं जाना है. When we'll study science and tech, we'll see what all this has effects on the body. तो आंसर में इतनी टेक्निकलिटीज आपको नहीं लिखनी होती. Here it is important to know only that it will have positive hormonal effects on your body. So good hormones will be released in a substantial quantity. Right? So this ends our this topic. It was a bit lengthy, I can understand, but please bear with me because this has a holistic coverage of each and everything that you need to know about this topic. लौट कर आते हैं अपने रिकॉल पेज पर. रिकॉल करके देखते हैं एक बार कितना याद आता है. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या क्या देखा था. पहली चीज, इंडिया के दो प्रिंसिपल, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और दूसरा वसुधैव कुटुम्बकम का प्रिंसिपल. तीसरी चीज थी कि हमने जो कोविड पीरियड में हमने एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाई है इन फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन. तीसरी चीज थी हमारी G20 की प्रेसिडेंसी, G20 की प्रेसिडेंटशिप, जिसको कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी डिसाइसिव. Okay, why? Because India has shown its exemplary global presence on different occasions, right? Holistic well-being is a concept. We have seen that well-being is not only the removal of diseases. तो यहाँ पर आप दो चीजें मेंशन कर सकते हो. पहली चीज जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, दैट इज WHO की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. WHO defines health as not merely the absence of disease, not merely the absence of disease, but the state of complete well-being. State of complete well-being. Okay? One thing can be this. Second thing is Paul Pearsall का एक I think यही था, द हार्ट स्पोर्ट करके था. जिसमें कि mentioned है the goal of medicine. Sorry, this wasn't. Sorry, I have mistaken it. ये पॉइंट नहीं था यहाँ पे. यहाँ पे पॉइंट था रिलेटिंग द साइंस ऑफ मेडिसिन करके एक बुक थी. See, even I am facing difficulties in recalling things. Science of medicine करके एक बुक थी. It's mentioned in the slides, not to worry. You can go and revise there. जिसमें it was written that medicine का जो purpose होता है, the purpose of medicine is to ensure complete removal of distress in patients. We have to completely remove the distress among the patients. That is a book regarding science of medicine. Okay. Then comes Ayush and its relevancy. We have seen Ayush is not a single field or not Ayurveda only. Ayush is, सबसे पहले आयुष की हमने definition क्या देखी थी? It is a traditional, non-conventional way of healthcare. Traditional, non-conventional way of healthcare. Traditional मतलब since ancient times. Non-conventional मतलब conventional ways of treatment होते हैं when you are having a specific set of disease. But non-conventional methods उनको कहा जाता है जो treatment के aid में या treatment के side में
some methods are adopted to make that treatment more effective, right? So that is what Ayush is all about. So it's traditional and it's non-conventional. Okay, traditional and it's non-conventional. Moving on further, रेलेवेंसी में हमने देखा था कि 7 सब ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है. क्या 7 सब ग्रुप्स थे? आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिक्पा, योगा. अब कुछ बचा गया. वी हैव डन विद इट. 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना सारे 7 सब ग्रुप्स. ओके, तो ये 7 सब ग्रुप्स मिला के बनाता है दिस आयुष. गवर्नमेंट स्टेप्स पर आते हैं. गवर्नमेंट स्टेप्स को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था. रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष रिलेटेड, then national health policy related, and then we have seen the global efforts. ठीक, इन 4 पार्ट्स में बांटा था ना हमने गवर्नमेंट स्टेप्स को. R&D में हमने क्या देखा था? 5 रिसर्च काउंसिल सेटअप किए हैं गवर्नमेंट ने, राइट? और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? दूसरी चीज क्या थी? सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, CIMR, in AIIMS Delhi, right? This was the first institute where for the first time scientific research on yoga was done. First scientific research in yoga, right? Standardization of आयुष में हमने एक आयुष मार्क लॉन्च करने का डिसाइड किया है, which will be on every आयुष product related to Ayurveda, naturopathy, homeopathy, etc. आयुष मार्क का अनाउंसमेंट PM ने किया है on Global Ayush Innovation Summit. Global Ayush Innovation Summit. See, why I am telling you where these all have been announced is, जितना ज्यादा आप लिखोगे कि इसका जेनेसिस कहाँ से है, उतना ज्यादा इट विल गिव ऑथेंटिसिटी टू योर आंसर, राइट? दूसरी चीज हमने डिसाइड किया, क्योंकि एक आयुष मार्क हम बनाएंगे तो हमें एक आयुष वर्टिकल क्रिएट करना पड़ेगा, एक आयुष फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी इन BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. आ जाते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बात करती है ऑफ इंटीग्रेटिंग द पोटेंशियल ऑफ आयुष, of integrating the potential of Ayush into mainstream conventional medicine, yeah, into mainstream pluralistic healthcare, mainstream pluralistic healthcare, right? So that was one point. Then आ जाते हैं आपके global efforts पे. तो ग्लोबल एफर्ट्स में सबसे पहले तो WHO ने सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रिसर्च करके एक आई एम नॉट एग्जैक्टली स्पीकिंग द प्रॉपर नेम, बट रिवाइज करने में सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च करके WHO हैज ओपनड दिस सेंटर. दिस इज फर्स्ट ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर, ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर ऑफ WHO इन जामनगर, गुजरात. काम क्या है इसका? ये रेगुलेट करेगा सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, स्टैंडर्ड सेटिंग वगैरह वाला काम करना है इसको. अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग अ डिजिटल library kind of thing, yeah, a digital record keeping kind of thing for all the researches done in this field and for all the data collected for this purpose, right? Under this program only the government is planning to launch this, right? तो ये हो गए हमारे गवर्नमेंट स्टेप्स भी. फिर हम आए थे मेंटल हेल्थ पे. तो मेंटल हेल्थ का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? बिकॉज देयर आर रिसेंट मेनी न्यूज़ेस और मेनी कॉन्टेक्स्ट इन विच मेंटल हेल्थ हैज बीन इन डिस्कशन. सो मेंटल हेल्थ का रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक वेलबीइंग. सो होलिस्टिक वेलबीइंग मीन्स
your external as well as your internal well-being. ठीक, so their mind or body, sorry, heart and soul comes into reference, right? Now, as your body requires treatment, mind requires healing, or soul requires healing, mental health requires healing. Now, how this healing is done? So, Ayush prefers the method of meditation, right? Meditation may it's mentioned in Upanishads. Mental health to be treated by meditation. Meditation is mentioned in Upanishads that we have 5 koshas in our body, starting from Annamaya kosh, that is the food kosh. We have to reach to Anandamaya kosh, that is the state of eternal bliss. Okay, this is where the meditation works. Okay, we've talked about it. Way forward में क्या है? तो वे फॉरवर्ड में हम मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया has been projecting itself as a global leader in the health sector too. Global leader in the health sector too. So it's high time that India should promote some of its traditional medicine methods, including these Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, Sovarikpa, etc. in treatment of various diseases, as well as making the mainstream treatment more effective, right? So we've revised it. इतना सारा पढ़ा था, but you have revised it within 10 minutes. So that's the significance of this page, right? I hope you'll understand it better. तो अब आगे चलते हैं हमारे next topic पे, which is DBT. But this is the last topic for today. And in fact, this is the last topic for this month's Yojana. Okay. तो आ जाते हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे, इंडिया की क्या कंडीशंस थी, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ समझेंगे, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखेंगे, डीबीटी और आधार के लिंकेजेस क्या है, डीबीटी का नीड क्या है, इम्पैक्ट क्या है डीबीटी का, एंड ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. ठीक, अब डीबीटी इज मूविंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल रेवोल्यूशन, राइट? India it was started as a good governance measure, but now India has achieved certain epitome that it is promoting it at global levels, right? So now let's move further. Talking about post-independence India, see the conditions in India were, when India got independence, India got it from the British Raj. And British Raj had exploited India to its help. Okay. Exploitation was at its help. So what happened was, when we got independent, we were very scarce with resources. We were very scarce with resources. But we have to also give, we have to also foster development in our country. So we had our leadership, a globally acknowledged leadership, which negated the rice bowl theory. Rice bowl theory can be, I'll explain you. They instead resolved to make economic progress in the same democratic setup. देखो, rice bowl theory क्या कहती है? This is a very good concept. You can very beautifully use them in your answers. Rice bowl theory कहती है, until and unless stomachs are full, until and unless stomachs are full, you can't expect people to strive for democracy, strive for a
term like democracy. ये है मतलब राइस बॉल थ्योरी। मतलब राइस बॉल थ्योरी का मतलब ये है कि लोगों को जो फर्क पड़ता है वो इनिशियली अपनी भूख से पड़ता है। जब तक उनकी भूख नहीं खत्म होगी, जब तक उनके पेट नहीं भरे होंगे, तब तक आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट के लिए आपके साथ इस लड़ाई में खड़े हों। राइट, सो दैट इज व्हाट राइस बॉल थ्योरी इज। बट आवर लीडरशिप सेड कि हम नहीं मानते राइस बॉल थ्योरी को, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम पहले इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, फिर हम डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करें। हमें सब साथ लेके चलना है, राइट? Because our economic progress was very much devastated. We had to do this also, we had to do this also. So इसी same democratic setup में they decided to take up economic progress along with promoting the democracy. Right? तो उसी के साथ concept आया हमारा the concept of a welfare state. The welfare state talks about rights for all and entitlements for the weak. वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक होता है पुलिस स्टेट, राइट? पुलिस स्टेट होता है कि जहां आप फोर्स से या जहां आप कोअर्जन से किसी रूल या लॉ को इम्प्लीमेंट करते हो। दूसरा होता है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जहां यू आर ट्राइंग टू मेक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन योर स्टेट, and these socio-economic developments are the things that are enforcing your law. Okay, so welfare state के दो epitomes होते हैं। Welfare state comprises of rights for all, whether weak or strong, they all will have rights. इसमें हमारा जो provision आता है that is of fundamental rights. दूसरा आता है entitlements for the weak. Entitlements for the weak. इसके जो प्रोविजंस किए गए हैं ये हमारे डीपीएसपी में किए गए हैं, and throughout the constitution there are several articles. When sir will deal with polity, he'll explain you very well what's the concept of welfare state. फिलहाल आपके लिए जानना बस इतना important है, welfare state is a state that makes socio-economic progress, alongside with the political developments. Alongside with the political developments. Right? Next is Article 21 is a fundamental right, but it's realized via DPSP, and DBT gives more teeth to this. Article 21 is right to life. It's a fundamental right. Okay. But this fundamental right is realized via DPSPs. Until and unless you are providing entitlements to the weak, you can't realize a right. Right? Then DBT gives more teeth to this fundamental right of Article 21. अब देखते क्या है, जल्दी से देख लेते हैं डीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज दिस माइट बी क्रिएटिंग अ फैटीग फॉर ऑल ऑफ यू आल्सो, क्योंकि काफी लंबा जा रहा है. बट प्लीज बेयर विद मी, बिकॉज वंस यू आर इन्वेस्टिंग टाइम ओवर हियर, then you don't have to look for any other thing for Yojana or for Kurukshetra or something other like. ठीक है, आपका करंट अफेयर्स मेंस के लिए यहाँ से हो रहा है, so don't have to worry about anything. जल्दी से देख लेते हैं डीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या है. Welfare benefits directly credited to the bank account or the postal account. ये अंतर क्या है बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने का या पोस्टल अकाउंट में क्रेडिट करने का, भी आगे देखेंगे क्या अंतर होता है. पोस्टल अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी, एब्सेंस ऑफ मीडिएटर्स, रेड टेपिज्म, होल्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, फोर्जरी. देखो डीबीटी क्या है, as the word itself suggests, it's direct benefit ट्रांसफर. गवर्नमेंट से बेनिफिट आ रहा है,
फॉर बीपीएल फैमिलीज। ठीक, अब अगर ये बेनिफिट बीपीएल फैमिलीज को जाने से पहले किसी मीडिएटर के थ्रू जा रहा है, तो हो क्या रहा है, बीच में ये मीडिएटर इस बेनिफिट को एग्जॉस्ट कर रहा है, राइट। मीडिएटर इस बेनिफिट को एग्जॉस्ट कर रहा है, एंड जब मीडिएटर इस बेनिफिट को एग्जॉस्ट कर रहा है, तो जो बेनिफिट उस बीपीएल फैमिली तक पहुंचना था वो उस अमाउंट में ना पहुंच के एक सर्टेन लेसर अमाउंट में पहुंच रहा है, या पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक मार्केटिंग या मीडिएटर्स या रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, किसी काम में अननेसेसरी डिले होना, राइट। अननेसेसरी डिले इज रेड टेपिज्म। तो इन सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए दिस कॉन्सेप्ट वाज this concept was inaugurated that we will be transferring benefits directly to the beneficiary. अब हमने आपको बताया था ना, there are two kinds of transfers, either to the bank account of the beneficiary or to the postal account of the beneficiary. तो एक सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी है कि जब हम डीबीटी की बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, तो it's not only about cash. It's not only about cash. DBT includes cash transfers as well as kind transfers. DBT includes cash transfers as well as kind transfers. Cash transfers में आते हैं like पीएम किसान। पीएम किसान के अंडर में जो पैसा मिलता है, या मॉनेटरी बेनिफिट्स जो मिलते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द फार्मर्स, वो डायरेक्टली आप फार्मर्स को ही ट्रांसफर करते हैं। एक स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं स्टूडेंट्स को फॉर परस्यूइंग देयर एजुकेशन, हायर एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन स्कॉलरशिप्स, ये भी कैश ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पेंशन्स। पेंशन्स भी कैश ट्रांसफर होती हैं टू द बेनिफिशियरी, टू रिटायर्ड पर्सन। अब आ जाते हैं काइंड ट्रांसफर। इसमें पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा होता है, इसमें आपके बेनिफिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, डायरेक्टली बेनिफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा नहीं ट्रांसफर। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर के पैसे पे कुछ अमाउंट लेस है, वो वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, वो आ गया काइंड ट्रांसफर। फूड ग्रेन सब्सिडी, मतलब किसी भी तरह की जो आपको सब्सिडी मिलती, दैट इज अ काइंड ऑफ काइंड ट्रांसफर, ओके, वो कैश ट्रांसफर नहीं है। दूसरा मिड डे मील्स। ठीक, मिड डे मील्स में क्या होता है, गवर्नमेंट मील्स डिलीवर कर रही है, कुक्ड मील्स होते हैं, गवर्नमेंट लगा इसमें भी कैश ही रही है, बट आपको वो कैश के फॉर्म में नहीं दे रही है, आपको वो काइंड के फॉर्म में दे रही है। ठीक, तो डीबीटी इज नॉट ओनली अबाउट कैश, इट इंक्लूड्स कैश ट्रांसफर्स। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो लाइक पीएम किसान, स्कॉलरशिप्स, पेंशन, कोई भी स्कीम्स जो कि मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रही हैं, राइट। एंड आपके काइंड ट्रांसफर्स में आएंगी ऑल काइंड्स ऑफ सब्सिडीज and schemes like midday meal. Okay, so these are about DBT structure. अब आ जाते हैं डीबीटी एंड आधार। तो देखो डीबीटी एक आपकी पर्सनल आईडी यूज करता है फॉर कैश ट्रांसफर्स। डीबीटी यूजेस आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी टू ट्रांसफर द बेनिफिट्स। Thus, Aadhaar acts as both a unique identifier as well as a financial identity. तो जो डीबीटी का प्रोसेस है उसको चाहे कैश ट्रांसफर्स करने हो चाहे काइंड ट्रांसफर्स करने हो, यूज किसे करता है, वो आधार। काइंड ट्रांसफर्स में आपका आधार यूज हो रहा है एज योर यूनिक आईडी, कैश ट्रांसफर्स में आपका आधार यूज हो रहा है एज योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी, राइट। अब बात करते हैं आधार एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी। Now when we talk about, wait for a second, हाँ तो अब देखते हैं, बात कर लेते हैं आधार एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी की। हमने अभी क्या देखा, वेट
हमने अभी क्या देखा कि हम आधार को यूज करते हैं बोथ एज अ यूनिक आइडेंटिफायर एज वेल एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी, राइट। जब काइंड ट्रांसफर्स होते हैं देन यू आर यूजिंग इट एज अ यूनिक आइडेंटिफायर, एंड व्हेन कैश ट्रांसफर्स होते हैं देन यू आर यूजिंग इट एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी, राइट। अब आधार एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के प्रोसीजर्स क्या हैं? फर्स्ट इज आधार पेमेंट्स ब्रिज। Aadhaar number mapped against bank accounts and transfers to such account can then be made simply by using the Aadhaar number. Second है Aadhaar enabled payment systems. A payment gateway where individuals can use their biometric credentials to carry out transactions in Aadhaar linked bank accounts. देखो इनमें अंतर क्या? This is important to understand. Aadhaar payment bridge APB और दूसरी तरफ है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, राइट। आधार पेमेंट ब्रिज, इसका सिंपली मतलब होता है कि आपका आधार नंबर लिंक कर दिया गया है आपके बैंक अकाउंट नंबर से, राइट। तो आपके बैंक अकाउंट नंबर की जगह आप आधार नंबर को यूज करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, राइट। दैट इज आधार पेमेंट ब्रिज। अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? देखो यहाँ डिफरेंशिएट कर लेना इनेबल्ड वर्ड से। ये है आधार पेमेंट्स ब्रिज, मतलब आधार के थ्रू आप पेमेंट्स कर रहे हो। ये है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार का यूज करके लेकिन आप पेमेंट किसी और तरीके से कर रहे हो। तो ये एक पेमेंट गेटवे है, राइट। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है कि आपको एक एग्रीगेटर दे दिया गया है, आपके बैंक और आपके आधार के बीच में एक एग्रीगेटर है जो कि आपकी आधार की बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स को मैच करेगा। आप अपने बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो जो कि आधार में मेंशन है। ये आपके बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स के बेसिस पर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट से आपकी ट्रांजैक्शंस करा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके सिर्फ आधार नंबर से, राइट, बिकॉज यहाँ आधार डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पेमेंट मैकेनिज्म, आधार पेमेंट्स बैंक, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्टली आपके आधार नंबर से नहीं होंगे पेमेंट्स, यहाँ होगा आपको अपनी बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स ऐड करनी पड़ेंगी, बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स ऐड करनी पड़ेंगी। उन क्रेडेंशियल्स को आपके आधार से मैच किया जाएगा एंड देन योर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होंगे, राइट। सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वेट फॉर अ सेकेंड। That is the basic difference between these two things, right? Okay, so understood the difference between these two. Now let's move further. Need and impact of DBT. Economic Survey 2015-16 realized that growth needs to be complemented with active government intervention to improve the quality of life of poor and vulnerable and thus achieve equity. Sorry, it's a spelling error. It's equity, but it is also identified that price subsidies that government offers is benefiting rich households than the poor, be it electric, water or fuel subsidies. Due to this leakage, not only was government creating a direct wastage, but also there was a loss of opportunity cost. Okay, तो देखो क्या डायग्नोज किया था इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इक्विटी अचीव करनी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, राइट। लेकिन हो क्या रहा था, गवर्नमेंट जब इंटरवीन कर रही है और गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है तो इन सब्सिडीज में लीक्स क्रिएट हो रहे थे जिसकी वजह से दिस वाज बेनिफिटिंग मोर द रिच पीपल rather than the poor people. Rich was benefiting more and the poor was still remaining poor only.
तो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये जो लीकेज है ये दो तरीके से डेंजरस हो रहा था। पहला तो ये कि गवर्नमेंट इससे एक डायरेक्ट वेस्टेज क्रिएट कर रही थी, मतलब डायरेक्टली वो जो ये सब्सिडीज का पैसा निकाल रही है वो पैसा तो डायरेक्टली वेस्ट हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज आल्सो अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लॉस का मतलब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। व्हेन आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वेरी वेल व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। फिलहाल के लिए आप ये समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वर्ड सजेस्ट्स, इस पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको और सेवरल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो कि और प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन आपने इस पैसे को सब्सिडीज में वेस्ट किया एंड वो सब्सिडीज भी एक डायरेक्ट वेस्टेज क्रिएट कर रही हैं क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच रही हैं जहां उन्हें पहुंचना है, राइट। तो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। तो इसी वजह से हमने डीबीटी लॉन्च किया था, mediated through the JAM Trinity. JAM is nothing but Jandhan Aadhaar Mobile. Jandhan is the bank account, Aadhaar is your unique ID, mobile matlab online banking, right? So through JAM Trinity, we have launched DBT, converting subsidies into DBT. Presently, DBT is covering over 300 central and around 2,000 state government schemes. In future, government is also planning to bring in DBT 2.0 and DBT 3.0. देख लेते हैं क्या है ये। डीबीटी 2.0, फिलहाल डीबीटी 1.0 क्या है या डीबीटी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या है? सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स without mediators. Transfer of benefits without mediators. This is DBT 1.0, right? अब यहाँ पे DBT 2.0 देखते हैं क्या है जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है फ्यूचर। Online eligibility verification mechanism, digitization and Aadhaar seeding of all documents required for purpose of beneficiary under a particular scheme. Example, DigiLocker and API Setu. सी डीबीटी 2.0 में क्या करना है, अभी फिलहाल क्या होता है डीबीटी 1.0 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे आधार हम वेरीफाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज अ मैनुअल प्रोसेस। इसको मैनुअल से शिफ्ट करके हमें डिजिटल कर देना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डिजी लॉकर जैसे एप्लीकेशंस को यूज में लाना पड़ेगा जिसमें कि हम सारा डेटा स्टोर कर सकें ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। एपीआई सीटू इज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, राइट। सो दैट इज डीबीटी 2.0 ऑनलाइन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। ये आपका कीवर्ड है, यू कैन टेक इट एज अ कीवर्ड। डीबीटी 3.0 क्या करेगा, तो डीबीटी 1.0 जो अभी चल रहा है उसमें प्रॉब्लम थी मैनुअल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की, तो डीबीटी 2.0 में हम लोग सोच रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। 3.0 में क्या है, transformative shift in benefit transfer to citizens, preparing social registries for mapping of target beneficiaries, precision based service delivery. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम मैनुअली आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेनिफिशियरीज को, मैनुअली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको बेनिफिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। जब हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे इन डीबीटी 2.0, फिर हम प्लान कर रहे हैं एक सोशल रजिस्ट्री बनाने का जिससे कि हम इजीली टारगेटेड टारगेटेड डिलीवरी कर सकें बेनिफिट्स की, ओके। ये बहुत से स्टेट्स अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं एट लोकल लेवल्स, लाइक कुटुंब इन कर्नाटका, परिवार पहचान पत्र इन हरियाणा, समग्र मध्य प्रदेश इन एमपी, जन आधार इन राजस्थान, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेट लेवल इंटरवेंशंस। इसी को नेशनल लेवल पे प्रमोट करना है।
Then the next point is your global acknowledgement. So India is considered to be the microcosm of the world. Therefore, any step that India takes at domestic level will be reflecting at the global level to help the humanity as well. Microcosm means it's the small laboratory. India is a small laboratory. And whatever experiment you are doing over here will be reflecting into the entire world, right? Whatever experiment you do over here will be reflecting in the entire world. Right? So that is one thing. The next is India's intervention in the form of DBT has been duly acknowledged by global organizations like World Bank. World Bank has called for world countries to adopt DBT style public intervention in disaster management. IMF has hailed DBT of India as a logistical marvel. These are some of the very important keywords about DBT. You can write in your quote directly in your answers with the name of organization. With the name of organization as well as the words that they have used for this scheme. DBT is not a social assistance program on its own, but a pathway to achieve them. ठीक है तो डीबीटी खुद एक सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है, लेकिन डीबीटी एक पाथवे क्रिएट करता है जो कि इन सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके at the best possible levels. So in a form, it is implementing DPSP. We have seen in the initial slides also that Article 21 is a fundamental right. Right to life is a fundamental right, but it is realized through DPSP. And DBT is giving more teeth to it. कैसे दे रहा है? ऐसे दे रहा है more teeth to it. ठीक है? It's not a social assistance program in itself, but it's a pathway to achieve these social assistance programs. India is also planning to launch a homemade DPI-based DBT paragon to the world. G20 summit, particularly the Global South. DBT paragon. Right? Now, in DBT paragon, we are planning to launch a global DBT platform. अभी बस this much is known about it. ग्लोबल डीबीटी प्लेटफॉर्म हमने प्लान किया है G20 की 2023 की समिट में प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड अबाउट इट. पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के लिए हम एक डीबीटी वर्ल्ड वाइड एक डीबीटी प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज इट अबाउट दिस टॉपिक. वंस वी विल रिवाइज इट, but before we revise, let me move further and tell you what you have to do in these slides. These are some of the snippets from the Yojana magazine itself. यहाँ से आपका ethics वाला section शुरू होता है. इसमें आपको करना क्या है, ये तो कुछ वो है केस स्टडीज हैं छोटी छोटी. ये केस स्टडीज आप डायरेक्टली अपने एथिक्स के पेपर में इंक्लूड कर सकते हो, राइट? यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम, रीड देम प्रॉपरली. एक सेपरेट नोटबुक बना लो या टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस पीडीएफ इटसेल्फ और उसको रखो. ये स्निपेट्स आपको हेल्प आउट करेंगे एथिक्स आंसर राइटिंग में, राइट? तो ये दीज आर फ्रॉम द बुक ऑफ प्राइम मिनिस्टर माय डियर फेलो सिटीजन्स. देन आता है ये वाला आर्टिकल, नॉन पोजेशन द गांधीयन थॉट. इसमें आपको करना क्या है, आपको ये आर्टिकल से गो थ्रू करना है. जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम एंड यूज दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर्स. यहाँ से आप ये समझो कि इनका नॉन पोजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई वाज दिस इम्पोर्टेंट, okay, and what are its postulates, right? ये सारी चीजें समझो and try to incorporate into your ethics answers. See, you are already seeing कि GSE इतना बल्कि हो रहा है that we have to make 2 parts of it, and 2 parts से ज़्यादा it will get very much monotonous for you guys also to study. Already ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया, so I cannot manage teaching ethics in this very video. I can do one thing, and this thing is that कि ethics के लिए I will be conducting separate classes if there will be demand for the same, right? See, because these things take a lot of effort.
take a lot of effort from our side. And if there will be demand for this purpose, I will definitely be teaching ethics. I'll be taking separate class for ethics. And while I will be teaching ethics, I'll be picking up all these articles and I'll be teaching you what's the relevance of these articles and how you can use them in your answers. Okay. But again, this entire plan, this entire course will be on demand. Because if we are putting this much of efforts, we also want that someone is curious to know about it. Someone is interested to know about it. Okay. So do comment in the comment section if you want a separate ethics class for this purpose. Otherwise, we'll be continuing with the Yojana this way, and I'll be providing you snippets from the Yojana magazine itself, where you can read those articles and you can use them in your ethics paper. If you are wise enough to do that, definitely you must do it on your own self, right? So, अब एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने डीबीटी पढ़ा था. Then we should end this. Okay, so post independence India फिर से आते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया क्या था? 1 second. We were completely exploited from the British Raj. So what we had was lack of resources, and our political leadership negated the rice bowl theory. Rice bowl theory I've explained you, which says that until and unless stomachs are full, people aren't going to support you for democracy. But we took economic progress and democracy hand in hand. And herein was born the concept of welfare state. Welfare state का concept क्या है? Rights for all and entitlements for the weak. Right? ये हो गया हमारा. फिर आते हैं हम concept of inclusive growth. Yeah, I have taught you in the mission life also when I was teaching. Inclusive growth क्या होता है? Growth benefits to the minimum possible, benefits to the smallest possible. ठीक है? DBT as a concept, क्या concept है ये? The transfer of benefits directly to the beneficiary. Transfer of benefits directly to the beneficiary. Absence of mediators. This is the concept of DBT. When did DBT come into picture? So we have seen in the section of need for DBT, we have seen how did DBT come into picture. So economic survey 2015-16 को mention करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 ने क्या फाइंड किया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है अगर हमको इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज क्या हो रहा है? ये लीकेजेस क्रिएट कर रहा है. लीकेजेस क्यों? बिकॉज इट इज बेनिफिटिंग द rich and the poor are still becoming extremely forward, right? तो ये लीकेजेस को प्रिवेंट करने के लिए लीकेजेस क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्ट वेस्टेज भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो क्रिएटिंग लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गवर्नमेंट कुड हैव इन्वेस्टेड इट समवेयर एल्स, राइट? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी लॉन्च डीबीटी backed by JAM Trinity. JAM is nothing but Jandhan Aadhaar Mobile. Jandhan is the bank account, Aadhaar is your unique ID, and mobile is your online banking. Okay? तो यहाँ से आया था डीबीटी. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हमने देखना है डीबीटी एंड आधार. आधार को हम यूज कर रहे हैं एज अ यूनिक आईडी एज वेल एज योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी. क्यों? क्योंकि आधार के थ्रू ही बेनिफिशियरी रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर डीबीटी, whether you have to make a cash transfer or a kind transfer. एक चीज हम भूल गए थे डीबीटी एज अ कॉन्सेप्ट में. डीबीटी includes not only cash transfers but cash as well as kind transfers.
कैश ट्रांसफर्स होता है जहाँ डायरेक्टली आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा होता है. काइंड ट्रांसफर्स होते हैं सब्सिडीज जहाँ पे गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग फीड कर रही होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट देयर विल बी सम लाइक स्कॉलरशिप्स वगैरह कैश में आती. मिड डे मील स्कीम्स के अंडर में जो खाना मिल रहा होता है, कुक्ड मील मिल रहा होता है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मनी, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट. तो आपको डायरेक्टली कैश नहीं दिया जा रहा है. तो डीबीटी इज नॉट ओनली अबाउट कैश, इट्स ऑल्सो अबाउट कैश एज वेल एज काइंड ट्रांसफर्स. डीबीटी एंड आधार देख लिया. अब आधार की हम इम्पोर्टेंस देखेंगे एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी. एक आधार एज अ फाइनेंशियल आइडेंटिटी के अंडर में हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आधार पेमेंट्स बैंक एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. How many of you remember what was it all about? When I am recalling, there's one advice. Whenever I am recalling, please try to pause the video and recall it on your own self. And then see what I have recalled and see what you have missed out. Okay? चलो start करते हैं. आधार as a financial identity. दो चीजें आएंगी इसमें. आधार पेमेंट्स बैंक, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. आधार पेमेंट बैंक है सिंपली आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया गया है. एंड अब आप अपने आधार नंबर को यूज करके आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इनेबल्ड से हमने समझाया था आपको अंतर ढूंढना है. मतलब ये एक तरह से आपको एक सॉरी 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 हाँ, आपको एक तरीके से इट इज प्रोवाइडिंग अ पेमेंट गेटवे. उस पेमेंट गेटवे पे आपको अपनी बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स डालनी है. एंड वो बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करेंगी फ्रॉम योर आधार क्रेडेंशियल्स. एंड देन यू कैन मेक ट्रांजैक्शंस इन योर आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट. ठीक. So that is all about APB and AEPB. Then next is impact of DBT. The DBT is presently used for around 300 central government schemes and around 2000 state government schemes. Okay, and it is being used fluently. And even the like what we call even the global acknowledgement it is receiving, right? So now next thing that you need to remember here is about global acknowledgement. We will see what different organizations are talking about DBT. यहाँ पे points आएंगे about WHO. WHO is recommending to use DBT in disaster management. Then you will have IMF. IMF calls DBT as a logistical marvel. Yeah. And then we are planning DBT 2.0, DBT 3.0. DBT 2.0 क्या है? ऑनलाइन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन या ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन. ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है DBT 2.0. और 3.0 है आपका सोशल रजिस्ट्री मेंटेन करना, जिससे कि आप टारगेटेड डिलीवरी कर सको ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, targeted delivery of benefits, right? So that's it about today's topics. And here we finish the Yojana of June 2023. Any doubts? Please do write in the comment section. Anything you didn't understood, you can always ask. And the link of the video will also be shared in our Telegram channel. And today on the Telegram channel, I'll be uploading the PDF of this document because today we have completed with it. So guys, please try and test this method and let me know whether it's beneficial or not. If not, then suggest whatever next, whatever beneficial ways we can use for it. Your suggestions will always be entertained. Okay. So thank you guys. Do like, share and subscribe to our channel if you like our videos. And stay connected
for further such informative videos. Bye-bye. See you in the next video. Take care and keep studying. Goodbye.